Everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to learn the use of have and has. First person singular I, first person plural we, second person singular you, second person plural is also you, third person is he, she, it, third person plural is they. You need to learn this or remember this table in order to understand grammar. हमें ग्रामर सीखना है तो ये टेबल हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. अब क्वेश्चन ये है कि हम हैव और हैज़ का यूज़ कब करेंगे. सो सिंपल, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट आई, यू, दे या वी होगा, हमें यूज़ करना है हैव. अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, हम यूज़ करेंगे हैज़. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. शी डैश अ न्यू बाइसिकल. शी has a new bicycle. They have already eaten dinner. Sorry for that. They have my brother dash a pet dog. My brother has a pet dog. क्योंकि यहाँ पे brother क्या हो जाएगा, he हो जाएंगे. Okay. We dash tickets to the concert. We have tickets to the concert. The book dash an interesting plot. Book is has. Book क्या हो जाएगा, it हो जाएगा. Okay. I want you to solve the sixth question. Please write down your answer in the comment box. Thank you.